Good morning students. Today our topic is rounding off to the nearest 10th and 100th. So firstly we will round off to the nearest 10th. So in order to round off the decimal number to the nearest 10th, we look at the digit in the 100th place. That is just right to it. जो 10th place होगा उसके just right में कौन सा place होगा 100th. तो हम 100th place को check करेंगे. तो let us take an example. 5.23 5.23 as we have to round off to the nearest 10th. So firstly we will write the name of the places above the digit. This one is the 100th क्योंकि डेसिमल के बाद जो है 10th then 100th. ये 100th place है, 100th 10th and this one is ones का हम वही लिखेंगे. अब हम क्या करेंगे, we have to check the digit in the firstly we underline the digit at 10th place because we are rounding off to the nearest 10th. So firstly we underline the digit at 10th place and now we will check the digit just right to it, that is 3. And 3 belongs to which group? 3 belongs to group 1 and so there will be no change in the underlined digit. Underlined digit remains as it is. So here our answer is, अब ये as it is है तो इसके पहले जो लेफ्ट हैंड साइड पे डिजिट्स हैं वो भी as it is रहेंगे. It means 5.2 and 3 become 0. So here our answer is 5.20. So now take another example. 9.78. Here 8 is on the 100th place, 100th, 7th is in the 10th place and 9 is in 1's place. So here we have to round off the digit number up nearest to 10th. So we will underline the digit in the 10th place and now we will check the digit just right to it, that is 8 and 8 belongs to group 2. Very good. 8 group 2 से belong कर रहा है, so we will add 1 to underline digit. Underline digit में हम 1 add करेंगे then it becomes 8. So here our answer is 9.8. This one is 8 and this 8 जो 100th place पे है that become 0. So here our answer is 9.80. Now we will start worksheet 6. Question number 1, that is based on where we round off the numbers to the nearest 10th. So here are worksheet 6 and question 1 is round off the following decimal numbers to the nearest 10th. A part is 7.14. This one is the decimal and this 1 is in the 10th place and 4 is in the 100th place. Firstly we will write the name of the places. 100th, then 10th and 7 is in the 1's place. For 1's we will write O and as we have to round off the following decimal numbers to the nearest 10th, so firstly we will underline the digit at 10th place and now we will check the digit just right to it, that is 4 and 4 belongs to group 1. So there will be no change in the underlined digit. Underlined digit remains as it is. वो as it is रहेगा. It means 1 and all the digit left to it remains also as it is. वो भी as it is रहेंगे and 4 क्या बन जाएगा 0. So here our answer is 7.10. Next है B part. In B part here is 4.58. अब आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर हम बार बार इनके प्लेसेस राइट नहीं करेंगे. सेम प्लेस के नीचे आप सेम डिजिट जो है राइट करते जाओगे कि 100th प्लेस के नीचे जो डिजिट है उसको 100th में ही, 10th का प्लेस का जो डिजिट है उसे 10th प्लेस में लिखेंगे. अब जैसे हमको 10th प्लेस के डिजिट को राउंड ऑफ करना है तो फर्स्टली वी राउंड ऑफ अंडरलाइन द डिजिट इन 10th प्लेस एंड नाउ विल चेक द डिजिट इन जस्ट राइट टू इट, that is 8 and 8 belongs to group 2. So we will add 1 to underline digit. Underline digit में हम 1 add करेंगे. 5 plus 1 is equal to 6. So here our answer is 4.6
and 8 becomes 0. 4.60 is our answer. Now next part C. C part is 10.05. तो हम कैसे लिखेंगे 10.05. 100th place, then 10th, then decimal, ones, और ये कौन से प्लेस का डिजिट है? दिस इज इन टेंस प्लेस, सो हम यहाँ पर लिख देंगे टेंस, ऊपर ही राइट कर देंगे. क्लियर? अब नाउ वी विल अंडरलाइन द डिजिट इन 10th प्लेस एंड वी विल चेक द डिजिट, जस्ट राइट टू इट, दैट इज 5 and 5 belongs to group 2, so we will add 1 to underline digit. Underline digit में 1 add करेंगे, so 0 plus 1 is equal to 1. So here our answer is 10.10. Now come to part D, that is 19.96. Firstly we will write the name of the places, या पहले से ही राइट कर लोगे और सभी डिजिट्स जो है उसके नीचे राइट करते जाओगे. So here we have to round off to the nearest 10th, so we will underline the digit in 10th place, and now we will check the digit immediate right to it, that is 6, and 6 belongs to group 2. So now we will add 1 to underline digit, that is 9 plus 1 is equal to 10. So how we will write the answer? 19.9, बिकॉज यहाँ पर 10 आ रहा है तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? 9 में 1 प्लस करेंगे, 9 प्लस 1 10, देन वी गिव कैरी 1, यहाँ पर 1 कैरी देंगे, 9 प्लस 1 10, अगेन कैरी देंगे, आगे हम फॉरवर्ड कर देंगे 1 and 1 2. सो हेयर आवर आंसर इज 20.00. क्लियर? तो कैसे करना है एक बार आप फिर से देख लीजिए. फर्स्टली वी अंडरलाइन द डिजिट इन 10th place, then we will check the digit in 100th place, that is just right to it, and 6 belongs to group 2, so we will add 1 to underline digit. When we will add 1 to underline digit, it becomes 20.00, क्योंकि यहाँ पर जो कैरी आएगा यहाँ से वो हम होल नंबर को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, वो कैरी वहाँ जाएगा. 19 है, 19 में 1 जब कैरी फॉरवर्ड करेंगे दैट बिकम्स 20. सो हेयर आवर आंसर इज 20.00, और सभी डिजिट्स क्या बन जाएंगे? 00. Now come to part E. Here our question is 0.95. 0.95. We will write the decimal under the decimal. डिजिट इन 10th प्लेस हम जो होगा वो 10th प्लेस पे राइट करेंगे, एंड 100th का 100th प्लेस पर. एज वी हैव टू राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10th, तो फर्स्टली वी अंडरलाइन द डिजिट इन 10th प्लेस, एंड नाउ वी विल चेक द डिजिट, जस्ट राइट टू इट, दैट इज 5, एंड 5 बिलोंग्स टू ग्रुप 2. ग्रुप 2 से बिलोंग करे, सो वी विल ऐड 1 टू अंडरलाइन डिजिट. अंडरलाइन डिजिट में 1 ऐड करेंगे, अगेन यहाँ पर क्या है, कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा. 9 प्लस 1 10, 10 की 0, और कैरी फॉरवर्ड करेंगे हम टू होल नंबर, जो यहाँ होल नंबर पार्ट है उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, एंड 0 प्लस 1 बिकम 1. सो हेयर आवर आंसर इज 1.00. इज इट क्लियर टू ऑल? अगेन देख लीजिए आप फिर से कि जब 5 बिलोंग्स टू ग्रुप 2, सो वी विल ऐड 1 टू अंडरलाइन डिजिट. अंडरलाइन डिजिट इज 9. व्हेन वी ऐड 1 टू इट, देन इट बिकम्स 10. 10 की 0, and carry forward to whole number, and here is 1 also. So our answer is 1.00. तो बेटा अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 के ABCDE 5 पार्ट्स कर लिए हैं. बाकी के जो 3 पार्ट्स हैं वो आप खुद से करोगे, FGH ये आपने खुद से करने हैं. नाउ वी विल राउंड ऑफ द डेसिमल नंबर टू द नियरेस्ट 100th. Now beta we will round off the decimal number to the nearest 100th. In order to round off the decimal number to the nearest 100th, we will look at the digit in the 1000th place, that is just right to 100th place. Clear? So let us take an example. Firstly we will take 7.123, and we will write the name of the places above the digit. फर्स्टली द डेसिमल, देन 10th, देन 100th, देन 1000th. तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे? 1000th. हम नेम ऑफ द प्लेसेस जो है एक बार राइट करेंगे, उसके बाद सभी डिजिट्स जो है अकॉर्डिंग टू प्लेसेस नीचे राइट करते जाएंगे.
2 is in hundredth and 1 is in tenth, and 7 is in ones place. For ones we will write O only, and as we have to round off to the nearest hundredth, so we will underline the digit in hundredth place, that is 2, and we will underline the 2. Now we will check the digit immediate right to it, that is 3, and thousandth place, 3 is in the thousandth place. So in order to round off the digit nearest hundredth, we will check the digit in the thousandth place. So here in thousandth place there is 3, and 3 belongs to group 1. So there will be no change in the underlined digit. Underlined digit में कोई भी change नहीं आएगा, and our answer is 7.120, and 3 become 0. Now take one more example, that is 8.486. 8.4, then 8 and 6 places के नीचे ही आपको digit write करते जाओगे. So as we here we have to round off to the nearest hundredth. So firstly we underline the digit in hundredth place, and now we will check the digit, just write to it, that is thousandth place, and in thousandth place here is 6, and 6 belongs to group 2. So we will add 1 to underline digit, and it becomes 9. 8 plus 1, 9. So here our answer is 8.490. जो बाकी के डिजिट है इसके लेफ्ट हैंड साइड में वो एज इट इज रहेंगे, एंड 6 बिकम 0. सो हेयर आर आंसर इज 8.490. तो इन्हीं एग्जाम्पल पर बेस्ड जो हम अपनी वर्कशीट 6 का क्वेश्चन नंबर 2 कंटिन्यू करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. So let's start question number 2. Here round off the following decimal numbers to the nearest hundredth. So firstly we will write the name of the places. Decimal, then tenth, hundredth, thousandth, year, and in left hand side ones and tens. And for ones and tens we will write only O and T. And now we will start our question A part, that is 7.125. We will write the digit according to their places, 7.1, 2 and 5. As we have to round off to the nearest hundredth, so firstly we underline the digit in hundredth place, and now we will check the digit, just write to it, that is 5, and 5 belongs to group 2. So we will add 1 to the underlined digit. Underlined digit में 1 add करेंगे. So here our answer is 2 plus 1, that is 3. So here our answer is 7.13 and 0, as 5 becomes 0 here. Now next है B part, 3.986. So here we will write the digits according to their places, then we will underline the digit in hundredth place, as we here we are going to round off to the nearest hundredth. So here we underline the digit in hundredth place, and now we will check the digit, just immediate write to it in thousandth place, that is 6, and 6 is also belongs to group 2. So here we will add 1 to underline digit, and it becomes 9, as 8 plus 1 is 9. So here our answer is 3.99 and 0, and all the digits that are left side to it becomes remains as it is, okay, and 6 become 0. So here our answer is 3.990. Now come to next part C, that is 4.014. We will write the digits according to their places. 4 is in ones place, 0 in tenth, then 1 in hundredth, and 4 in thousandth place. So firstly we will underline the digit in hundredth place, that is 1, and now we will check the digit, just write to it, that is 4, and 4 belongs to group 1. So there will be no change in the underlined digit. Underlined digit में कोई भी change नहीं आएगा. So here our answer is 4.010. And next D part is 17.006. So here we will write the digits according to their places. 1 in tens place. ये new digit add हुआ है, तो हम इसे tens place में ही write करेंगे. Then we will underline the digit in hundredth place, that is 0. And now we will check the digit in thousandth place, that is 6, and 6 belongs to group 2. So we will add 1 to the digit
0, 0 में 1 ऐड करेंगे, सो हियर आवर आंसर इज 17.010, 17.010. This 0 become 1 and 6 convert in 0 and all the digits left to it remains as it is. It means 17.010. जो डेसिमल का प्लेस है वो चेंज नहीं होएगा, वो एज इट इज ही रहेगा. नाउ कम टू पार्ट ई, दैट इज 2.999. Firstly, we will underline the digit in 100th place, that is 9, and now we will check the digit in 1000th place, that is also 9. So we will add 1 to this 9. इस 9 में हम 1 ऐड करेंगे. So जब हम 1 ऐड करेंगे, 1 हम यहीं ऐड कर लेंगे. जब हम 1 ऐड करेंगे, this 9 become 9 and 1. ये रफ, वैसे तो आपने रफ में करना है. 9 and 1 10 की 0, कैरी 1, इस 9 पे 1 आ जाएगा अगेन. 9 and 1 10 की 0, देन कैरी फॉरवर्ड टू होल नंबर 2 and 1 3. इट मीन्स हेयर आवर आंसर इज 3.00. तो ये जो आप एडिशन किया हमने, ये आपने रफ नोटबुक पे करनी है, फेयर नोटबुक पे नहीं राइट करनी. रफ पर करके आपने जस्ट आंसर राइट करना है. इसका हमारा राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3.000. तो बेटा अब हमने वर्कशीट 6 की क्वेश्चन 2 के भी 5 पार्ट्स कर लिए, ABCDE. तो आपने इसका भी जो नेक्स्ट बाकी के पार्ट्स है FGH, ये आपने खुद से कंप्लीट करने हैं. तो बेटा आपका आज का होमवर्क यही है कि यू विल कंप्लीट वर्कशीट 6 इन योर फेयर नोटबुक क्वेश्चन 1 and 2. ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय.